Good afternoon, friends. Welcome to the afternoon session on reading skills. As we know that communication has four important components, that is listening, speaking, reading, and writing. So very important part of communication skill is reading skill, because it is often said that good readers are good communicators. Who are good readers, they are good communicators. We all know how to read, but how to read skillfully and artfully, that is the question. Skillful reading is whether we can absorb, whether we can have specific information for better learning in a limited time. Means we have very limited time for reading, so whether we are able to absorb specific information in a limited time. And artful reading is an act which can be learned easily by some systematic approach. We know that many students are very good in studies, some are not so good. Why? Because some students are very skillful and artful in reading. Whatever they read, they absorb. So I start with small quotation. Reading is to the mind what exercise is to the body. Like for physical fitness, exercise is very necessary. If we want physical fitness, then we exercise. Similarly, if we want that our mind should be fertile, it should work efficiently, it should absorb the things efficiently, then reading is very necessary. Do you agree with this or not? Yes. So reading is very important for our routine work, our academic work, for our professional work. So we come to, because reading is one of the major part which we should have from communication skills. But what is reading? Broadly, in layman's language, it is intake of information. Means whatever we are reading, our mind is absorbing, our mind is grasping that reading. And then what is writing? Anyone? Expression means production of information. So who are very good, who have good reading skills, there are also good writing skills. So reading is intake of information and writing is the production of information. In this presentation, we will see that how we can make our reading efficient, skillful, artful. So first, I will talk about what is reading. Reading is a complex cognitive process of decoding symbols in order to construct or derive meaning. Like if we read, then our mind has different cells which absorb what we are reading. Do you know about something about Bloom's taxonomy? Anyone? What is Bloom's taxonomy? There are three domains in as per Bloom's taxonomy. One is your
cognitive domain, means your thinking, your understanding, your comprehension. It has different levels. Similarly, we have second domain, that is psychomotor, related with your hands and mind's coordination, means skill development. And third is your affective domain, means related to your attitude. So they have different levels. So here reading is a complex cognitive process of decoding symbols. Whatever we are reading, we decode that in our mind and then derive some meaning out of it. Like if we eat something, but we do not digest it. Similarly, if we read, but we do not understand, we do not comprehend the things, then there is no use of reading. If we are eating food and we do not able to digest, then what is the benefit of that food? Similarly, if you are reading something, you must derive some meaning out of it. You must have some understanding, some grasp, some comprehension out of it. Like a typist is very fast, but he do not care about accuracy. What is the benefit of fast typing? Similarly, a car taxi driver is driving car without caring about the safety. Then what about that fast driving? So whatever we read, that we should absorb also. We should understanding the things. Do you agree with me or not? Because when we read, we must try to understand the things. We must comprehend the things, that yes, this is the meaning out of it. Then reading process requires continuous practice, development and refinement. Reading habits cannot be developed overnight. It takes a lot of time. From our school days, we start reading. Sometimes we pick bad habits in the schools, that we read the word by word, or we read loudly. So that is not good habit of reading. So for efficient reading, we should have continuous practice, continuous develop our habits of reading. Then reading is a fundamental part of everyday life. You see that wherever we go, we have to read something. We go to the text counter, we have to read the text, what is written there. Sometimes even I have seen that some careless person, they do not read the text, and then their train is missed. What will be the time, or which train, which date? So we will have to read everything, whatever we have. Reading is very important part of our daily life. Then reading enables us to interact and understand the world around us. If we have good reading habits, efficient reading, then we can go anywhere, because like we go from this northern side to southern side, we are not efficient in English reading, then how we will able to, because they do not know Hindi. So there is a biometer that we must have our good grasp of English reading, because there all signboards, all things will be in English or in their local language. So
in language skills, whatever we have done, we listen and speak. Input is our listening, then we speak, and then मैडम ये नीचे क्या आ रहा है गूगल इसको then we read and write. How much time approximately we spend daily in our routine life? How much time we spend on communication? Do you have any idea? Any center can you connect? Yes, sir. Can you call them, sir? You can Delhi. Yes, कौन सा? Yes, sir. Any idea what type of communication we have our daily life? How much time approximately we spend in our communication in all these skills? Yes, Sarsa Panniwa. क्या नाम है? Yes, Chaudhary Devilal, State Institute of Engineering Technology. Do you have any idea what percentage of time spent in communication? Sir, please external mic मत use करिए आप. सर आप सिस्टम के आके बात करिए. Yes. हाँ जी. Yes sir. Okay sir. Okay. We will not listen. We will not able to listen. Anybody from the studio? How much time we spend in our daily communication? I can't put the exact number of hours. Hours or percentage. Maximum times we communicate, or rather during our waking time we communicate. Either we communicate interpersonally, and rest of the time when we are not in interpersonal communication, that time we communicate intrapersonally. That we keep communicating to ourselves. To ourselves. But generally in all these components, we spend verbal. We spend almost 80, more than 80% of our time in communication. And what percentage we are, there may be different situations, but what percentage of time we are spending in listening, speaking, reading and writing? Maximum times we speak. We speak, right? And hardly we listen. Hardly we listen. Actually, and equally proportionate to listening, I guess, is reading. No, sir, writing. Writing. Equally proportionate to listening and is writing, and as compared to that, comparatively, this reading is lesser than speaking. So we can say that maximum times we are into this oral communication, that is by way of speaking. By way of speaking. Yeah. But this research shows something else. We spend maximum time in listening. Because that is actually that we should practice, but I talk that what we actually practice, and this data shows what we should be practicing. Practice. Generally in a good atmosphere, this is the percentage of time we spend 9% of our communication in writing, 16% in reading, and 30% in speaking, and 45% in listening. So listening is very important for us, because we do not have good listening skills. I think Professor P.K. Singlaji will be covering this topic. So we should have good listening skills to be good speakers, and we should have good reading habits
for good writing. Then I will come to what are the benefits of effective reading. Effective reading can provide you with a comprehensible input from the book or document that you read. If we have habit of good reading, our reading habits are effective, then we are able to understand the things immediately. We are able to comprehend the things immediately. Then second, it also enhances your general ability to use other language skills, listening, speaking, and writing. Do you think that who are not reading, they are good in listening, speaking, or writing? No. Because whatever language we have to read. Then and only then we are good writers. We can listen, we can understand others' point of view, and then we can have interaction or we can speak. It also enhances vocabulary, because when we read, we go through different words and then we come to different expressions, that what will be the meaning of this particular word in this expression, because there are few words which have only one meaning. Each word have different meaning in different expressions. Then it also keeps your mind focused on the material and prevents it from unnecessary distractions. This is very important, because nowadays we see that our students, they are not able to focus on the reading, because their minds are preoccupied or their mind is somewhere else. They have different distractions like mobiles, your computers, then games. So they have different distractions and they are not good readers. Then it also enables you to extract useful information much more efficiently within a limited time. You see that even in my own days, there were some my classmates who were able to read and grasp the things within limited time. Means when your exam is near, within 3-4 days they were able to absorb the things. Why? Because from school days they were having good reading habits. It doesn't mean that you cannot be a effective reader or you cannot have good reading habits. You can develop, but through a systematic approach, through proper training. We see that some students, when our exams are near or some type interview is very near, then our mind starts working very efficiently. So it means we are not utilizing our mind in the routine days. If we have habit of reading in routine days, then at the last moment we will not have stress on our mind, or we will be able to understand or comprehend the things very easily, right? Helps to consolidate both previously learned language and knowledge. क्योंकि हर किसी के माइंड में, बैक माइंड में कोई ना कोई नॉलेज रहती है, कोई ना कोई उसका पीछा होता है, जो कि उसको पता होता है कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है और उसमें ये था, बिकॉज दिस इज लॉजिकल अरेंजमेंट. Subject to subject, your knowledge increases. So he or she is able to relate the information. Then helps in building confidence as you start reading longer and later voluminous
टेक्स्ट. अभी आप छोटी छोटी बुक्स पढ़ते हैं, बट इन द later years, maybe in your postgraduate or you are in PhD, you will have to refer many bulky books. So if you are not good in reading, then you will be afraid of reading. Many times when we open the book, just seeing the size of the book, we just sleep. कई बार तो ये कहते हैं कि अगर सोना होता है तो यू स्टार्ट रीडिंग ए बुक, और नींद अपने आप आ जाती है. ये उन लोगों के साथ ही होता है हु आर नॉट गुड रीडर. इफ यू आर गुड रीडर, देन आपका इंटरेस्ट उस बुक में होता है और आपको नींद नहीं आती. अदरवाइज तो बुक खोली और यू स्टार्ट स्लीपी. नॉवल में नहीं पढ़ता. इट मीन्स वी आर, इंटरेस्ट की बात है इसमें. अब मतलब वी आर टू क्रिएट इंटरेस्ट इन अवर प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स. वट एवर यू आर टीचिंग, we are studying, that we are to create interest, we are to develop interest on those subjects. It also gives you pleasure and relaxation, as books are the best and most reliable friends. If I quote many good personalities like our Maharaja Karan Singh, in one day they were showing in the TV that he has his own library. Daily before sleeping, he reads some pages of a book. Similarly, there are other personalities, before sleeping, they read the books, because from the books we get everything. Whatever we can visualize, that is from your books, that yes, this is the information, how it will look. So reading, efficient reading is very important. Then for efficient reading, you must have some speed of reading. Do you have any idea what should be the speed of an average college student? Average college student. Anybody? Madam, we have Delhi. That then can we have City Polytechnic? City Polytechnic is, yes, you come, sir. Do you have any idea what should be the average speed of a college student? Yes. They're not able to. Yes. Anyone from City College? Yes, sir. Anyone from studio? Anyone from studio? Do you have what should be the average speed of a student per minute? Yes, per minute. 50 to 60 words per minute, maybe 50, 60 in 1 second, 1 word. per minute. Per minute. It is very less. But as per one research, average reading speed of a college student is 150 to 250 words per minute. 150. 150 to 250 वर्ड्स. हम अभी आपने कभी अपनी कभी निकाल के देखिए आपकी स्पीड क्या है. We should also try that what is our speed of reading, because this is very important. Speed of reading is related to your comprehension also. Whether you want to things memorize, you want to learning, or you want to comprehension. So, and good, even I have seen that in foreign countries, they have speed up to 2000 words per minute. And in India, it is around maximum exceptional cases, it is 1000 words per minute. हाँ जी?
Scanning. That is also skip. What will be the purpose? What is the purpose of your reading? That we will also see. Then, very important, plodding. Have you heard plodding? Reading word by word. Because some of students, they learned from their childhood that they read word by word, which is not good sign. Just there, when they will be studying word by word, then their comprehension will be less. It is proven fact that when we read word by word, then our comprehension will be less. So speed of reading is also related with the what is the purpose of reading. Purpose of reading. If, like you said, that if you have to memorize, याद करने हैं, तो it will be fewer than 100, less than 100. But for learning, for understanding, it should be around 100 to 200 के बीच में होता है. और अगर आपने, it shows that for your comprehension, your speed will be more. It will be 200 to 400 words per minute. And जो आप कह रहे हो scanning and skimming is going through the text quickly. That is called skimming. And that can go up to 400, more than 400. So this is your, what will be the purpose and your average speed of reading per minute. We can also calculate what is our speed at this age, right? So it is very important that as our speed increases, our comprehension level also increases, because when we study, we read word by word, then our mind is not able to comprehend. तो एक वर्ड पे ही हम कंसंट्रेट करते रहते हैं. So what is the difference between an efficient reader and inefficient reader? On one side there is efficient reader and on the other side is inefficient reader. जो efficient reader है वो क्या करता है? Always reads for ideas or information. वो जो भी पढ़ता है उसमें से अपना एक आइडिया, एक अपनी समरी बना लेता है कि इसमें क्या है. आपने देखा होगा जो अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो अपने, उनकी रीडिंग हैबिट, अगर आप उनकी रीडिंग हैबिट्स हैं, वो उसमें से जो भी पढ़ते हैं उससे एक, दे इमीडिएटली ग्रास्प दैट दिस इज द आइडिया ऑफ दिस पैरा, दिस इज दिस आइडिया ऑफ दिस पैरा. बट जो इनएफिशिएंट रीडर है, he tries to read word by word. तो वो रट्टा लगाता है, क्रैमिंग करता है, जिसको हम कहते हैं, राइट. देन रीड्स ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, मल्टी फ्रेजेस, लॉन्ग सेंटेंसेस. ये नहीं कि वर्ड बाय वर्ड, लॉन्ग फ्रेजेस, ब्लॉक ऑफ लेटर्स, उन पे वो कंसंट्रेट करता है, उनको पढ़ता है, लेकिन रीड्स वर्ड बाय वर्ड. Quickly adjust his her speed of reading to the nature of the text. जो efficient reader है वो अपनी स्पीड, जो पर्पज है उसके हिसाब से वो उसको एडजस्ट करता है, बट वो शुरू से लाके उसको एंड तक एक ही स्पीड से उसको धीरे धीरे लगा रहता है. तो इतने में उसको नींद आ जाती है. एंड ही इज नॉट एबल टू ग्रास्प एनीथिंग आउट ऑफ दैट. Just starts from beginning and goes till the end and does not able to grasp the things. Then sets the purpose of reading right in the beginning. उसका पर्पस क्या है शुरू में उसको he decides. But here
he reads everything and deliberately goes slow while reading. जो एफिशिएंट रीडर है, जो 1 घंटे में पढ़ लेता है, उसको जो इनएफिशिएंट रीडर है, he may take 3 to 4 hours for same material. तभी कहते हैं कई जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो 1-2 घंटे में पढ़ के अपना सो जाते हैं, और कई मेरे जैसे जो होते हैं वो सारा ही रात बैठे पढ़ते रहते हैं और सुबह वे फिर खाली होते हैं. So they are inefficient readers. To be efficient readers, visualizes idea. Means visualize, अपने माइंड में एक उसकी पिक्चर बना लेता है कि भी ये क्या है, इसमें क्या कहना चाहता है. ट्राई टू हैव सम विजन कि इसमें पढ़ के क्या है. जो इनएफिशिएंट है, दे वोकलाइजेस और सब वोकलाइज वर्ड्स व्हाइल रीडिंग. कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज दिस वोकलाइजेस और सब वोकलाइजेस? व्हाट इज वोकलाइज, वोकलाइजेशन? बोल के. जो इनएफिशिएंट रीडर होता है वो आइदर ही स्पीक्स व्हाइल रीडिंग और he speaks in mind while reading. That is sub-vocalization. Vocalization, speaking while reading, but sub-vocalization, speaking in mind. हम कई बार माइंड में अपने माइंड में बोलते रहते हैं, तब वो रीड करते हैं. Has a good vocabulary in that subject. जो भी आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, विदाउट वोकैबुलरी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रीड बिकॉज दे डू नॉट हैव गुड वोकैबुलरी. उनके पास उसका मीनिंग नहीं, हर मीनिंग के लिए दे हैव टू गो टू द डिक्शनरी. ही हैज टू रेफर द डिक्शनरी, but has limited vocabulary which hampers his or her speed and understanding. Continuously keeps improving his or her pace of reading. ये आपको थोड़ा सा पढ़ा नहीं जा रहा ये, but rarely attempts speed reading. जो efficient reader है, it tries to improve his or her speed. Like we have 150 to 200. He may increase it to 250, 300, 350, but he never attempts to improve his reading speed. Then last is properly try to sort out the material as critical, interesting, analytical. किस टाइप का मटेरियल है, whether it requires some mathematical formulas or it requires some analysis. Like that he analyzes the text, but ये अपना indiscriminately चाहे जो भी है उसको he or she starts cramming, उसको घूटा लगाते हैं. जो भी हो उसको एज ए सच. कई बार मैथमेटिक्स में जो हमारे टीचर्स हैं दे नो वेरी वेल कि मैथमेटिक्स में क्रैमिंग नहीं चलती. दे विल हैव टू अंडरस्टैंडिंग. अगर आपने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, he or she cannot write the things. So जो efficient reader हैं, they try to analyze the things very efficiently and then reproduce the information in the examination or any somewhere else, right? So this is difference between an efficient reader and inefficient reader. Then how we can improve our reading skills? There are some steps. Figure out the purpose for reading a particular text. कि आपका पर्पस क्या है? Just you are studying it for relaxation or leisure, or you are reading it for examination purpose or point of view. So we will have to decide first of all what is the purpose of our reading. Then
spot the parts of the text relevant to the identified purpose and ignore the rest. जो उसका main idea है, he or she absorb that main idea and ignore the rest. मतलब ये नहीं है कि शुरू से पढ़ना शुरू करा और एंड तक पढ़ते चले गए. बट जो एक गुड एफिशिएंट रीडिंग करनी है तो आपको उसमें से जो उसका आइडिया है, मेन थीम है, दैट यू आर टू ग्रास्प. देन चूज द एप्रोप्रिएट रीडिंग स्ट्रेटजी दैट सूट्स योर पर्पस. देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, reading strategies that we will discuss later on, and accordingly you have to adopt that strategy as per your purpose. Then test or assess your comprehension during reading and also when the reading task is completed. Means you evaluate your reading. How? You will have to tell someone else that yes, I know this. Sometimes they also suggest that there should be some shadow teaching. Means he should speak like he is teaching in the class. Whatever he is learned, he should speak those concepts, principles, procedures like he is telling or he is teaching in the class. You must be knowing that many of our bureaucrats, before coming to the IAS or PCS or HCS, they are lecturers in the colleges or schools. Many of, I know personally, many bureaucrats, because they were able to focus the things. Whatever they are reading, they will explain in the class. And with that, they have more clarity with that subject. Do you agree with this or not? Because when you teach in the class, you will have to tell the concepts, principles, and procedures. With that, your clarity of the subject will be much more. Then, what are the common obstacles in effective reading? Can anybody tell what they feel that what are the obstacles in effective reading? Madam, can we go to any center? कौन सा? कोडिया. Yes. Kodia Institute of Business Management. Yes. May I know what are the common obstacles in effective reading? Do you have any idea, sir? Anyone like to talk? Please go there. They are asking us a question. Sir, do you have any idea what are the common obstacles or problems with effective reading? Please, anyone, please. Yes. Hello. Hello. Yes. So the writing may affect. Writing may be effective. Yes, sir. Okay. Obstacles. Asking what is the problem? Obstacles उसमें क्या? Proper language Proper language. of the format. Okay. Anything else? Hello. Hello. Yes. Yes. So poor vocabulary, Poor vocabulary. Right. grammatical mistakes, Okay. Lack of light, proper light. lack of proper light, That is not. and some jargons. Hello. Okay. Okay, sir. Okay. And some jargons.
jargons, okay. Lack of concentration. Yes, lack of concentration. That is the okay. Distraction. Difficulty in reading out these panels. Okay, okay. Thank you, sir. Anybody from studio? Again, the style that a particular writer opts for his writing, the style of writing. Style, I mean, you can say from where are you or where are you from? मतलब मैडम इफेक्टिव रीडिंग में आपके मतलब क्या क्या ऑब्स्टेकल्स मतलब जनरल जो है आपको मतलब क्या प्रॉब्लम जाती है कि आप इफेक्टिव रीडिंग नहीं कर पाते? Vocabulary, okay. राइटर का स्टाइल आपको समझ में नहीं आ रहा है, you are not able to grasp the or comprehend the writer's words. And again, the vocabulary, and both is highly enriched vocabulary and poor vocabulary. Both these can be obstacles. Sir, there are so many diversions also, which act in a natural way. Yes, yes. Okay, thank you. General obstacles, madam, common जो है मतलब that is one what this professor from Korea Institute, lack of concentration. सबसे जो important है कि we are not able to concentrate on the reading or on the study. We will go in details. Then eye fixation, टिक टिकी, जिसको हम हिंदी में टिक टिकी भी कहते हैं कि कई बार ना उसमें वर्ड पे ही हम देखते रहते हैं, एक वर्ड उसको आपको समझ नहीं आ रहा है, यू फिक्स योर आईज ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड. देन रिग्रेशन, एनीबॉडी रिग्रेशन कैन टेल व्हाट इज रिग्रेशन? Then reading aloud or turning the head from side to side. वही जो vocabulary, indiscriminate use of the dictionary. So we come first, lack of concentration. What is this problem? Poor reading habits leads to poor concentration. जैसे हमने पहले who are efficient readers and who are inefficient readers. अगर you do not have good reading habits, then you will not be able to concentrate on the reading. You will not be able to concentrate on the studies, because we see that majority of students nowadays, they are not able to concentrate on the studies because their minds are preoccupied with something else, or they are not understanding the things in right perspective. So they have poor concentration. Then reading often appears to be an unpleasant task when we are forced to do it and our mind begin to drift. जो उसकी रीडिंग हैबिट नहीं है, तो जब उसको हम we try to push, yes you must read, और पेरेंट्स कहते हैं कि आपने रीड, तो वो किताब लेके बैठ जाता है, लेकिन he starts sleeping, he feels sleepy. Yes, कई हमने देखा है बच्चे बुक्स खुली और अपने फेस पे रख के सो जाते हैं. Means they do not have sufficient reading habits. Their mind is preoccupied. So they are not able to concentrate on the studies. Then second obstacle is eye fixation. While reading, when one is unable to progress well beyond a thought, expression or word,
it is regarded as eye fixation. क्योंकि he does not know the meaning of that word और जो expression उसको समझ नहीं आता, then he is not able to forward. He is not able to go ahead. How he can remove it? Divide the sentence into different thought zones and don't fixate onto one. मतलब ये नहीं है कि एक एक्सप्रेशन पे या एक सेंटेंस पे वो अपने आप को टिकटिकी या उस पे अपनी नजर लगा के उसको एक ब्लॉक में पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको समझे कि इसमें क्या इसका मीनिंग है. कई स्टूडेंट्स में ये बहुत भारी प्रॉब्लम है आई फिक्सेशन की. हु आर वेरी पुअर रीडर्स, दे स्टार्ट फीलिंग स्लीपी व्हेन दे एक वर्ड के आगे वो नहीं बढ़ पाते. देन regression. Regression means going back again and again to the same sentence. When we are unable to understand an idea, we habitually go back to the part where it occurs in a passage or simply reading the text again and again to understand the idea. आपको कोई पर्टिकुलर समझ नहीं आ रहा है, हम उसको बार बार उसको पढ़ते रहते हैं. विद दिस योर स्पीड ऑफ रीडिंग रिटार्ड्स कम हो जाती है और इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी कम होती है. करें क्या? टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, मेक योर आई मूव ओवर एट लीस्ट 2 to 3 words in one go and let it glide over the text in a rhythm. स्मूथली आप उसको पढ़ते चले जाए. अगर आपको कुछ नहीं, you start underlining the things, but don't go again and again back to the same sentence which you are not able to understand. Then reading aloud or turning the head from side to side means कई स्टूडेंट बोल के पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे झूमते रहते हैं. कई स्टूडेंट्स की हमने देखी है, आते हैं ये हैबिट्स. तो इसमें क्या होता है? मूविंग द हेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मूविंग द लिप्स व्हाइल रीडिंग और ग्लाइडिंग ए पेन, पेंसिल और स्केल थ्रू द टेक्स्ट आर आल्सो नॉट वर्थ इम्बाइबिंग. कई बच्चे उसको ऐसे मतलब इसको स्पोर्ट लेके उसको पढ़ते हैं. दैट इज आल्सो नॉट efficient reading. Ideally, our eyes should see and our mind should read the text before us. Our mind and eyes, they should concentrate on the things because we are seeing through the eyes and absorbing in our mind. आप जो कोऑर्डिनेशन है आपकी आईज और माइंड की अगर बिल्कुल सही होगी तो you will be able to grasp the things more efficiently. Then indiscriminate use of the dictionary. कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जब भी उनको प्रॉब्लम आती है दे स्टार्ट immediately referring the dictionary. Is this a good habit? Anybody from studio? How we should use the dictionary? There are times it happens that if we are not able to get meaning of any word, then we should go for reading of either the complete sentence or the passage, because from the context also we could make out the meanings. Yes. So it is not necessarily so that every time when you are stuck, you go to the dictionary, and we should not refer very often, but we should collect some words and then we can refer the dictionary. So कई बार कहते हैं कि आप घोटा लगा लो, every day you have 10 or 15 words cram करो और उसको आप religiously याद कर लो, which not a good sign. You must read the things, and from that whatever you have difficult you collect the words and then refer to the dictionary.
Lack of guidance about proper utilization of dictionary also leads to damage to our reading habits, because in technical education there are many technical words which are not given in the dictionary. So you will have to go through that text and then derive meaning out of it. What is the meaning of that particular word in that text? Frequently referring dictionary to find the meanings makes us to lose the spontaneity in our reading process. अगर हम बार बार डिक्शनरी को, फिर हमारा जो इंटरेस्ट है, कई बार हम 5-7 वर्ड देखते हैं, उसके बाद we lose our interest. So better is that you collect some words that yes, this, and then at the end you can see the words, what were the meaning of that words in the dictionary. Then what are the keys to effective reading? How we can have effective reading? First question is, can I become an effective reader? Yes, we can. As with any subject matter, reading requires work and discipline, especially if it is not your strong area. Because in technical education, we have different technical subjects. So to develop interest on those subjects, we will have to go into deep in that subject. Then and only then we can have effective reading. A dislike for reading does not have to limit how well you can do it. Some students, they don't like the reading, so they drift their attention from the technical subjects. Second question is, are there techniques and methods that can help me be a more effective reader? Yes, we have some techniques by which we can have good effective reading skills. What are those? Before that, there are 3 methods that by which we can improve our reading skills. First is mapping. Second is KW charts, KWL charts, and then SQ3R. What is mapping? You must have seen that some students are good learner through visual pictures. We all are. Whatever we see, the things we observe. So in mapping, whatever you have the idea that you must draw the picture of that idea. Like you have main idea, and from that you can draw the different ideas that this is sub themes, or this is sub themes, or mini, you can say that some more what will be drawn from that main idea, outshoots, right? So while you are previewing, use your map or diagram to show the central or main theme. आपका main idea क्या है? From that, draw lines away from the central idea on which to write down your secondary ideas or supporting ideas. Main idea से आपके supporting ideas क्या है? As per one research, 75% of students are visual learners. Therefore, putting content in a more graphic style can improve comprehension for many readers. Means whatever we are reading, we put that in a visual form. From that, we can
easily see the things, yes, and that can be in your memory also. Then next technique is KWL. What is K? What do you know about the subject or chapter? And then W, what do you want to know? And L is, what have you learned about the subject or chapter? So on one side, you draw what do you know. Then on the second column, what you want to know. And on the third column, what have you learned about the subject or chapter. Right? So through this, you will be having that where I am not comprehending the things, where I am not understanding the things. What is the deficiency in my reading? When you have this KWL, then you will be knowing that where is you are deficient. Then third is SQR3. It is very similar to both the previously mentioned method. Here what they say, the purpose of this method is to encourage you to preview. Preview means before reading, look at the questions that go along with your chapter and then to focus on the detailed reading of your chapter. One is preview and second is review. Do you have any idea what is difference between preview and review? Pre-reading and after reading. So you must have survey. Then based on your survey, what is the most probable question from that text, and then read as per your questions, reread and review. So mainly these three techniques are used by the researchers to increase the reading. Then what are different strategies of reading? What different kinds of reading? Reading is according to your purpose and manner of comprehending. One is called extensive reading and second is called intensive reading. Extensive reading is for pleasure, any topic or interest, like we read comics or some novels, short newspapers, and other forms of light reading material. That is your extensive reading, just have for your pleasure. What is intensive reading? Careful or in-depth reading. You read for details and extract specific information on particular topics. So mostly what we are doing, intensive reading related to your subject or related to your branch. We are studying those subjects very religiously. We have in-depth reading. Then intensive reading, then reading techniques for intensive reading. There is one scanning and second is skimming. Do you have any idea what is difference between scanning and skimming? Can we have any center? कौन सा सेंटर? केसीटी कभी चलता है? May I have some idea what is scanning and skimming? KCT Polytechnic, KCT Engineering College.
नहीं चल रहा है ना. So scanning is rapid reading assisted by keywords to locate specific piece of information. Here we concentrate on the specific keywords. जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन 8086. Similarly, if you are studying some civil engineering subject like concrete technology, then you are concentrating on mixed design. Then whatever specific information you want to have, you just scan through the text. Yes, I want this particular word. So looking for a word meaning in the dictionary, getting a document from the filing cabinet, or looking through the yellow pages, that is you just scan. Then what is skimming? In skimming, we have rapid reading focusing on the title, heading, topic, sentence, signpost to get the main idea. Usually in our engineering, whenever we have any subject reading, then we first skim that particular chapter or topic, that what is the main idea out of that topic. Means effective preliminary step to reading thoroughly, because after skimming you can quickly go back to details you need to read entirely. आपने एक बार स्किमिंग कर लिया, उसके बाद आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उस पे you go through that particular topic. Then these are different skimming steps. Then one is your exploratory reading. Explore means जो आप descriptive type text होते हैं उनसे you try to explore the things. Allots more time for reading. That is your exploratory reading. Then one is critical reading. In engineering, mostly we have this type of critical reading. We question, analyze, and evaluate the text using critical thinking, differentiate between fact and opinion, recognize author's purpose in writing, make inferences about purpose and characters, recognize persuasive techniques or propaganda designed to sway you to believe. Means whatever you are reading, you are to evaluate the things out of that, because in cognitive domain we have different levels knowledge. Like I have told you that first level is your knowledge, then your comprehension, third is your application, and fourth is your evaluation, and then synthesize. So here we go up to the evaluation level. So that is your critical reading, and then analytical reading, like in mathematical problems or scientific formulas. That is careful attention to each word and its importance in relation to other words in the sentence or the paragraph. Like we have some faculty from maths, you have that analytical reading. So now I come to this, what are the tips for effective reading? Sometimes some students are not able to read due to some
this eye problems, or you do not have proper number of you do not have a proper eye checked, so you may be have problems in reading the things. Then get rid of the habit of pronouncing words. If you have, as you read, if you sound out words in your throat or whisper them, your reading rate is slowed considerably. So the students who have that habit of speaking while reading or speaking in mind while reading, they should avoid these habits, because this slow down your comprehension, and it also affects your speed of reading. Then find out what you want to know, and for that you need to cut through and assess what is to be skipped from reading. Like whatever you are reading, you must have the main idea that what is your purpose of reading, आप उससे चाहते क्या हैं. Then your reading rate should vary accordingly to your reading purpose. Like in the previous slide, we have that what will be the speed for memorization, for then your understanding, then your comprehension, and for skimming. Accordingly, you adjust your speed of reading. It is always important to stress on qualitative, not quantitative reading. Like in the previous slide, we have discussed that if you are driving very fast, but without caring about safety, that is of no use. So without compromising that, you have read about 15 pages or 20 pages, but you are not able to grasp anything out of it. It is of no use. So we should emphasize on quality, means whatever we are trying to understand, we are trying to comprehend the things, that is more important, because whatever we are reading, we are getting the information that we are to reproduce that information, means in our writing skills. Cultivate a positive attitude towards reading. Don't give up reading in the first 10 to 15 minutes itself. कई बार हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स पहले 5-10 मिनट उनको बैठना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 10-15 मिनट के बाद ही उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो खत्म हो जाता है 10-15 मिनट में. सो वी शुड practice more and more in reading. Or there is one more suggestion, that when you have high concentration, then you must study the tough subject. If you are reading simple subjects, then later on it will be on your mind, that when your concentration of your mind is known more, then you will not be able to comprehend the easy tough subjects. So first of all, we should start with the tough subjects, then go to the simple subjects. While reading, new ideas and concepts will flash in the mind, and the same may be added in the margin. हमें छोटे छोटे अपने नोट्स भी बना लेने चाहिए, जो कि हम पढ़ते हैं, जो कि later on we can refer. Fix some amount of time daily exclusively for reading, and over a period of time it will become a practice. आपने देखा होगा कि कई जो आपके कुलीग्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं, डेली दे रीड
5 or 10 pages and then they sleep. So it should be a regular habit that before going to sleep or daily I will be reading so many pages. With that, it will become your habit. Always keep a pen and pencil handy. कई बार हम देखते हैं कि हम पढ़ने बैठे हैं, पढ़ना शुरू करा, आपके पास बनाने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो फिर वो माइंड में चलता रहता है कि ये मैं कैसे करूं. सो व्हेन यू आर रीडिंग इन रूटीन, you must have your pen or pencil handy so that you can note the necessary things. Or mark a check on the margin of what is important while reading. Explain what you read. Means that shadow teaching. जो भी आपने पढ़ा उसको you try to that you are teaching someone whatever you have studied, or that you are teaching someone else. With this, you will have more clarity whatever you have read, and it will also evaluate your reading, whether you are able to understand the things or not. These are routine things. Then learn and revise the ways to read effectively. Whatever you have learned, you must revise it after in the beginning. If you want that your things should be fresh in your mind, then they say that as per one research that first you review those things after fortnightly. 15 दिन के बाद एक आप फिर उसको देखिए, फिर उसको बाद एक महीने के बाद, then after 2 months, like that, then your things will be permanent in your mind. So these were some points for your effective reading, and I also want to show one small video which will tell us how to concentrate on studies, how to concentrate on reading. Can we show that? Hey, hello. बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं बन रही, पढ़ाई करने वक्त ध्यान इधर उधर जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है. और मैं समझता हूँ कि ये बहुत लोगों के साथ होता है कि जब पढ़ने बैठते हैं थोड़ी देर कंसंट्रेशन बनती है, उसके बाद ध्यान इधर उधर चल जाता है. बहुत बार अपनी बुक से ज्यादा सामने वाली दीवार इंटरेस्टिंग हो जाती है. सो इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ 10 टिप्स जिसके साथ आप अपनी स्टडीज में, अपनी पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे, ज्यादा मार्क्स ला पाओगे, विच मींस बेटर रिजल्ट, बेटर करियर, बेटर लाइफ. पॉइंट नंबर 1, राइट टाइम टेबल. बहुत बार क्या होता है, हम एकदम जोश में आते हैं, बड़ा मोटिवेटेड हो जाते हैं और उस दिन सोचते हैं यार इस हफ्ते में ये सिलेबस, इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ये वाली पूरी बुक 3 दिन में खत्म कर लेनी है. पूरे जोश में, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ टाइम टेबल बनाते हैं कि ये आज के दिन 4 घंटे लगातार बैठना है, कल भी 4 घंटे लगातार बैठना है, उसके बाद देखो मेरा सिलेबस कंप्लीट. फिर पहले दिन पूरे जोश के साथ बैठते हैं, थोड़ी देर बाद ध्यान इधर उधर जाता है, ध्यान भटकता रहता है और एट द एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ होता. करते करते दूसरे दिन, तीसरे दिन के बाद जोश खत्म हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है और उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं. सो इसका सोल्यूशन है थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल. अपना एम बड़ा रखो, अपना टारगेट बड़ा रखो, लेकिन पहले दिन एक छोटी शुरुआत करो. अपने माइंड को धीरे धीरे आदत डालो कंसंट्रेट करने की. अपने माइंड को धीरे धीरे कंडीशन करना होगा. पहले दिन हो सकता है सिर्फ 15-20 मिनट्स सोच के बैठो कि मुझे 20 मिनट्स लगातार बैठना है, उसके बाद आई टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, फिर 20 मिनट्स बैठूंगा, फिर 10 मिनट्स ब्रेक. सेकंड डे उस स्पैन को बढ़ा दो, अगले दिन मुझे 30 मिनट्स कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है, देन आई टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक. नेक्स्ट डे 40 मिनट्स करते करते आपको आदत पड़ जाएगी 1 or 2 आवर्स कंटिन्यूअसली बैठ के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने की. अपने माइंड को धीरे धीरे उस आदत में लेके आना होगा. एकदम एक्सपेक्ट करेंगे वो नहीं होगा, उसके बाद हमारा जोश खत्म हो जाएगा. सेकंड पॉइंट जो आपको टाइम टेबल बनाने वक्त ध्यान में रखना होगा वो है पीक कंसंट्रेशन टाइम.
हम सबकी बॉडी अलग अलग है, हम सबकी कंडीशनिंग अलग अलग है। हम सबका एक टाइम होता है दिन का जिसमें हमारी कंसंट्रेशन बेस्ट होती है। कोई अर्ली मॉर्निंग कंसंट्रेट ज्यादा कर पाता है, कोई रात को ज्यादा कंसंट्रेट कर पाता है, किसी के लिए इवनिंग इज अ बेटर टाइम, किसी के लिए आफ्टरनून इज अ बेटर टाइम। आपको देखना होगा आपके हिसाब से कौन सा टाइम ऐसा है जिसमें आपकी कंसंट्रेशन पीक पे रहती है। उस टाइम को अपने टाइम टेबल में स्टडी टाइम जरूर रखो, बिकॉज दैट इज द टाइम जिसमें आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ के अपना टाइम सेव कर पाओगे और बाकी एक्टिविटीज में भी अपना टाइम बांट पाओगे। पॉइंट नंबर 2, सफिशिएंट स्लीप। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारा रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, हमारी बॉडी की एफिशिएंसी कम हो जाती है और माइंड की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। आइडियली ऑन एन एवरेज हमारी बॉडी को 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप क्लास में ज्यादा अटेंटिव रह पाओगे, जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाओगे, आपके माइंड की कंसंट्रेशन आपको जगाने की जगह बाकी एक्टिविटीज में रहेगी, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में रहेगी। और हाँ, ये 7 से 8 घंटे की नींद अपने घर पे पूरी करनी है, क्लास में या ड्राइविंग करते हुए नहीं। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेस। 4 दिन रह गए एग्जाम्स को, डर लग रहा है, सिलेबस बचा हुआ है, तैयारी हुई नहीं है, पैनिक हो रहा है। जब ऑलरेडी टाइम कम है तो फिर आपके लिए उस वक्त एक मिनट जरूरी है। सिंपली अपने वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट करो। डर डर के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन और कम कर रहे हो, विच मीन्स अपने डर को और बढ़ा रहे हो। सो अपने वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट करो, विच मीन्स बेटर प्रिपरेशन, बेटर तैयारी, उससे आपका डर और कम होगा। सो जब भी एग्जाम्स का पैनिक हो, जब भी एग्जाम से डर लगे, एक लाइन अपने आप को याद कराओ, आई हैव टू कन्वर्ट माय वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। इसके अलावा स्टूडेंट लाइफ में कई ऐसी बातें होती है जो हमें इमोशनली डिस्टर्ब कर जाती हैं और उस स्ट्रेस की वजह से भी हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स से कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, किसी फ्रेंड से कोई झगड़ा हो गया, रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम हो गई, या किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, उस वजह से भी हमारा ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है और हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कोशिश करो कि इन प्रॉब्लम्स को आप लिंगर ऑन ना करो, इनको सॉल्व करो, इनको डिस्कस करो, अपने फायदे के लिए अपने आप को खुश रखो। किसी से झगड़ा हो गया, किसी से प्रॉब्लम हो गई है, किसी ने कुछ कह दिया है, तो 2 लाइंस याद करो और वापस अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। 2 लाइंस अपने आप को बोलो, जिंदगी को मैंने कुछ इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। सो अपने आप को लाइट रखो, स्ट्रेस फ्री रखो, खुश रखो, अपने मुंह पे एक स्माइल रखो, आपकी कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगा। 4th पॉइंट इज डाइट। एग्जाम्स के दिनों में या क्रूशियल पढ़ाई के दिनों में आपकी डाइट भी एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि आपकी डाइट डायरेक्टली आपके ब्रेन की वर्किंग को अफेक्ट करती है। सो कुछ डूज बता रहा हूं जिसका आप अपनी डाइट में ख्याल रख सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स लो, येलो वेजिटेबल्स लो, होल फूड यानी कि अनप्रोसेस्ड और अनरिफाइंड फूड लो, नेचुरल शुगर यानी कि फ्रूट्स खा सकते हो, नट्स लीजिए यानी कि काजू, बादाम, पिस्ता। कोशिश करो अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, यानी कि रेगुलरली पानी पीते रहो, इन बिटवीन जूसेस भी ले सकते हो। और हाँ, एक ही बार में ज्यादा खाने से अच्छा है कि आप रेगुलर मील्स लो, यानी कि हर 3 घंटे बाद एक लाइट मील ले लिया। कुछ डोंट्स भी है जिनका आपको अपनी डाइट में ध्यान रखना होगा। व्हाइट ब्रेड अवॉइड करो, पोटैटोज अवॉइड करो, आर्टिफिशियल शुगर यानी कि टॉफीज एंड कैंडीज अवॉइड करो, और एग्जाम्स में फ्राइड से तो दूर रहो। और ये जो कॉफीज एंड एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये आपको इमीडिएट बूस्ट तो दे देती है, लेकिन ज्यादा लेने से इनका रिवर्स इफेक्ट भी होता है। पॉइंट नंबर 5, रिवार्ड योरसेल्फ। अपने आप को इंसेंटिव दो, खुद को बताओ कि अगर तूने 2 घंटे में ये टास्क खत्म कर लिया, उसके बाद तुझे क्या रिवार्ड मिलने वाला है। अपना फेवरेट गाना सुना जाएगा, या अपने किसी फ्रेंड को कॉल की जाएगी, या अपनी फेवरेट गेम खेली जाएगी, या वॉक पे जाना है, या अपना कुछ फेवरेट खाना है। सो कोई भी ऐसा रिवार्ड, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा इंसेंटिव जिसके साथ आप अपने आप को टास्क पूरा करने पे शाबाशी दे सको। पॉइंट नंबर 6, बी रेडी। बहुत बार ऐसा होता है, पूरे जोश के साथ, पूरे मन के साथ पढ़ाई करने बैठते हैं, फिर याद आता है, ओ यार नोटबुक तो रह गई, नोटबुक, ओ यार पेन तो रह गया, फिर उठे, ओ यार मेरा तो वो स्केल रह गया, फिर बैठे। ऐसे कई बार उठने के साथ हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और जो हमारा मूड बना होता है पढ़ाई करने का, उस मूड की बैंड बज जाती है। सो जब भी पढ़ाई करने बैठो, अपना पूरा सामान, अपनी नोटबुक्स और कुछ स्नैकिंग के लिए अपने पास रख सकते हो, पानी की बोतल पास रख सकते हो, ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े। पॉइंट नंबर 7, वॉच योर एनवायरनमेंट। अपनी पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट करने के लिए आपको अपने आसपास कंसंट्रेशन वाला एनवायरनमेंट भी बनाना होगा। कोशिश करो कि डेस्क पे बैठ के पढ़ो, टेबल और चेयर के साथ पढ़ो इंस्टेड ऑफ बेड, क्योंकि बेड पे आपका माइंड और आपकी बॉडी का रिलैक्स करने का दिल कर पड़ता है।
अगर आपके स्टडी एरिया में कुछ ऐसी आवाजें आ रही हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि पड़ोस वाले आंटी आ गए उनकी आवाज आ रही है, बाहर से ट्रैफिक की आवाज आ रही है, डॉग्स की बार्किंग की आवाज आ रही है और दूसरे रूम से टीवी की आवाज आ रही है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पे आप आवाजों को अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसका सोल्यूशन है व्हाइट नॉइज। व्हाइट नॉइज साउंड एक यूनिफॉर्म साउंड है जो आपका ध्यान अलग अलग साउंड्स की जगह सिर्फ एक साउंड पे रखेगी और आपकी कंसंट्रेशन में हेल्प करेगी। इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स में ये फ्री अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर सकते हो। जब भी बाहर की आवाजें आ रही हो और आपका ध्यान इधर उधर लगा रही हो, हेडफोन्स लगाओ, व्हाइट नॉइज ऑन करो और अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। एक और चीज का आपको ध्यान रखना होगा, वो है पढ़ाई के टाइम पे आपका सेलफोन और इंटरनेट की यूसेज। फोन को हम साइलेंट पे रख देते हैं, कई बार फोन को साइलेंट करके हम पास पे रख देते हैं, लेकिन हर 4-5 मिनट बाद उसको हल्का सा ऑन करके, लाइट ऑन करके चेक करते हैं कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई। अब नोटिफिकेशन नजर आ गई तो चलो देख भी लेते हैं, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, फेसबुक की नोटिफिकेशन, अब देख लिया तो चलो रिप्लाई भी कर देते हैं, रिप्लाई किया तो चलो एक और रिप्लाई आ गया। करते करते एट द एंड हम सोचते हैं यार पढ़ने के लिए बैठे तो बहुत देर थे, लेकिन पढ़ाई कुछ खास हुई नहीं। सो पढ़ने के टाइम पे अगर इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं है तो इंटरनेट ऑफ कर दो। अपने फोन को आसपास नहीं, अपने फोन को अपने से दूर रखो कि मैं 2 घंटे के लिए पढ़ने बैठ रहा हूँ, 2 घंटे फोन मेरी अलमीरा में रहेगा, ताकि जब हम फोन यूज करें तो फोन ढंग से यूज करें, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें। पॉइंट नंबर 1, हैव अ वाई शीट। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ने के लिए बैठे हैं और थोड़ी देर बाद हमें पता ही नहीं चलता हमारा ध्यान कहाँ उड़ा हुआ है, कुछ और ही सोच रहे होते हैं, डे ड्रीम कर रहे होते हैं, फैंटेसाइज कर रहे होते हैं, किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। इसका सोल्यूशन है वाई शीट। जहां भी अपने अपने टास्क लिखे हैं या अपना टाइम टेबल लिखा है, उसके नीचे अपनी वाई शीट लगा दो। वाई शीट क्या है कि मेरे लिए ये पढ़ाई क्यों जरूरी है, मेरे लिए इस टास्क को खत्म करना क्यों जरूरी है, इससे मुझे क्या फायदा होगा, मुझे लाइफ में, मेरे फ्यूचर में इसका क्या फायदा होगा, मुझे फाइनेंशियली कैसा फायदा होगा, मेरे लाइफस्टाइल को कैसा फायदा होगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसा फायदा होगा, मेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, क्या रीजन है जिसकी वजह से इस टाइम पे मेरे लिए पढ़ाई करना जरूरी है। जब भी आपका ध्यान इधर उधर जाए, जब भी ध्यान फैंटेसाइज करे, डे ड्रीम करे, सामने अपनी वाई शीट को देखो, दोबारा पढ़ो, इमीडिएट मोटिवेशन मिलेगी, इमीडिएट रीजंस मिलेंगे वापस पढ़ाई पे जाने का और बेटर कंसंट्रेशन बनेगी। पॉइंट नंबर 9, डू क्रिटिकल टास्क फर्स्ट। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है और जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वो थोड़ा थोड़ा एग्जॉस्ट होता जाता है। इसलिए जरूरी है कि पहले आप क्रिटिकल टास्क करो ताकि आपकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे लगे। और वैसे भी अगर हम इजी चीजें पहले कर रहे हैं और मुश्किल चीजों को बाद में छोड़ रहे हैं तो हमें शुरू से ही माइंड में वो लगा रहता है, एक प्रेशर रहता है, एक स्ट्रेस रहता है कि इसके बाद वो मुश्किल वाली चीज करनी है, तो कहीं ना कहीं हमारी कंसंट्रेशन और खराब होती है। अगर हम पहले मुश्किल वाली कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लाइट रहते हैं कि इसके बाद तो इजी चीजें आने वाली है। 10th पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट, मेडिटेशन एंड योगा। योगा और मेडिटेशन आपकी कंसंट्रेशन की पावर्स में वंडर कर सकती है। मेडिटेशन और योगा में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ आप अपनी कंसंट्रेशन के लेवल को बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं आपको कुछ क्विक टिप्स देता हूं जिसके साथ आप अपनी रेगुलर लाइफ में ज्यादा टाइम निकाले बिना अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हो। जैसे कि सुबह उठे तो 5 मिनट 7 मिनट किसी एक साउंड पे कंसंट्रेट किया, किसी एक चीज पे कंसंट्रेट किया, शायद बाहर से बर्ड्स की आवाज आ रही है उस पे कर लिया, फैन की आवाज आ रही है उस पे कर लिया, बाहर हल्की हल्की ट्रैफिक की वॉइस है उसको कर लिया। किसी एक चीज पे आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कराओ, थोड़े थोड़े देर रोज करो और इस पैन को बढ़ाते जाओ। आपको नजर आएगा कि आपकी कंसंट्रेशन में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है। इसके अलावा जब भी आप ब्रेक लो तो आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग के साथ आपकी ऑक्सीजन सप्लाई जो ब्रेन को जा रही है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप योगा में भ्रामारी प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या सर्वांगासन कर सकते हैं। तो ये थी 10 टिप्स जिसके साथ आप अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हो, बेटर रिजल्ट ला सकते हो। तो एक बार इन 10 टिप्स को रिवाइज कर लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, राइट टाइम टेबल। नंबर 2, टेक प्रॉपर स्लीप। Number 3, avoid stress. Number 4, watch your diet. Number 5, reward yourself. Number 6, be prepared. Number 7, watch your environment. Number 8, have a why sheet. Number 9, do the critical tasks first. And number 10, meditation and yoga. So I hope कि ये 10 टिप्स आपके काम आएंगी, आपकी स्टडी में, आपकी पढ़ाई में आपको फायदा देगी। तो इस वीडियो के बारे में अपने व्यूज, क्वेश्चंस, सजेशंस कमेंट्स में जरूर। So this was regarding how we can concentrate on reading on our studies. So friends, this was all about reading skills.